लैपटॉप के अंदर यूएसबी लगाएं, पावर को ऑन करें, F7 दबाएं फॉर प्रो लाइन लैपटॉप के लिए F7 और एरो की से सिलेक्ट करें USB 2.0। Install now. यहाँ पे 64 बिट या 32 बिट जोन सी आपने सेलेक्ट करी हो, सेलेक्ट करके आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट करके नेक्स्ट करें। उसके बाद इसके अंदर डाटा जितना भी है मैंने वॉश कर दिया, मैंने सारी पार्टीशनों को डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे इसका डाटा नहीं चाहिए। अगर आपका डाटा बचाने वाला है तो फिर आप सिर्फ सी ड्राइव पर नेक्स्ट कर दें। USB को उतार दें, yes, skip. I don't have internet क्योंकि ये हम बाद में सेटिंग कर रहे हैं लिमिटेड सेटअप के साथ। इधर हम एडमिन लिख देते हैं, पासवर्ड में नेक्स्ट कर देते हैं, खाली जगह आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट कर देते हैं। ये विंडो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ड्राइवर्स इंस्टॉल करूंगा। USB को दोबारा लगा के लैपटॉप में, ये डिस्प्ले के ड्राइवर नहीं होगा। USB दोबारा इसमें लगा के USB को खोल के इसके अंदर मेरे पास स्नैपी ड्राइवर है। ड्राइवर खोल के इसके अंदर एक फाइल है जिसके साथ X64 लिखा, उसको डबल क्लिक करके यस करना। इधर जो ड्राइवर होने वाले हैं उनका रंग होगा ग्रीन, आगे लिखा होगा अपडेट ड्राइवर।
या आप सिलेक्ट ऑल कर लें ऊपर से और इंस्टॉल नाउ कर लें, या जो आपके पास जो ग्रीन शो हो रहे हैं उनको सिर्फ चेक मार्क करके ऊपर बटन होगा इंस्टॉल का, उसको क्लिक कर दें। ये ड्राइवर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद सॉफ्टवेयर की बारी आ जाएगी। अब हम सॉफ्टवेयर करेंगे। ये रीस्टार्ट होने के बाद इसके ड्राइवर सारे अपडेट हो जाएंगे। यूएसबी ने एंटर किए, वो आ गए। यूएसबी को खोल के ये ड्राइवर के सॉफ्टवेयर है, सॉरी 64 बिट वाली विंडो इंस्टॉल करें। अब क्लासिक मीडिया प्लेयर को मैंने डबल क्लिक किया, उसके बाद ये पॉपअप खुल, उसको बंद करके नेक्स्ट कर दूँ। नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल करें। उसके बाद गूगल क्रोम को मैंने डबल क्लिक किया है, डबल क्लिक हो गया, ये गूगल क्रोम भी इंस्टॉल हो गया। थोड़ी देर में शो हो जाए। मैंने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया है, अभी स्टार्ट कर दी, थोड़ी देर में वो भी शो हो जाए। अब ये लैपटॉप बिल्कुल ओके हो चुका है, आप वाईफाई कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।